laws of motion. So we are going to do force in this chapter. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. Sorry. So we'll start with what is force. What is force? Force is a phenomena that can change the state of rest or of motion of the body. It can produce motion in the body or change the direction of motion. बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स द बॉडी continues to be at a state of rest or uniform motion as long as no force acts on it. मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा, अगर वो मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो चलता ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स हम लोग एक्ट नहीं करते हैं. देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट. सो इफ देयर वी हैव अ बॉडी, उसमें अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट विल कॉज अ मोशन. ठीक है, अ फोर्स can alter the size or shape of the body. That is, it can change the dimension of the body. So ऐसा बॉडी था, ऐसा हो गया, हो ही सकता. Correct? So how do we define it again? A force is the physical cause which can change or tend to change either the size or the shape or the state of rest or the state of motion of a body. शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आ सकता है, मोशन में है तो मोशन में चेंज कर सकता है, हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, हो सकता है उसको स्पीड अप कर दे, हो सकता है उसको रोक दे. एनीथिंग दैट हैपेंस लाइक दैट रिक्वायर्स फोर्स. अगर फोर्स नहीं है तो जैसा है वैसे ही रहेगा, जो शेप है वही शेप में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा. क्लियर? फोर्स दो तरीके का होता है, पता है?
There are two types of forces. Contact force, non-contact force. Two bodies need to be in contact for a contact force to happen. Obvious बात है ना. Example देते हैं. Frictional force. Frictional force के बारे में जानते हैं? Do you know about frictional force? No? No? Oh my God. Do you know about friction force? No? How many of you have done this? How many of you have done this? दौड़ के आए. ठीक है. एंड देन आकर हम लोग स्किड मार के रुक गए. ऐसा किए हैं आप लोग? दौड़ के आए, पैर रोक लिया, स्किड कर रहे हैं. हैव यू डन दैट? सीरियसली खेलते नहीं हो आप लोग? नहीं करते हो. दौड़ के कभी स्पीड में रुके हो? है ना, कभी रुके हो ना? कभी रुके हो जब दौड़ के आए हो, रुकने की कोशिश की, नीचे में साबुन गिरा हुआ, सोप है, क्या होगा? मतलब फ्रिक्शन नहीं है, दैट इज द मीनिंग ना, स्लिप नहीं हो रहा है. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? आपका फोर्स को अपोज करता है, आपका मोशन को अपोज करता है. करेक्ट? ठीक है. सो अगर हम दौड़ के आते हैं, दैट्स अ नाइस डायग्राम. दौड़ के आते हैं और अपने आप को रोकने का कोशिश करते हैं, तो व्हाई डू आई स्टॉप? आई स्टॉप बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन माय शूज एंड द ग्राउंड. यस, द ओपोजिंग फोर्स. ठीक है. ये फोर्स ज्यादा होता है ऑन रफ सर्फेसेस एंड ये फोर्स कम होता है ऑन स्मूथ सर्फेसेस. हाउ मेनी ऑफ यू सीन पीपल बोलिंग रफ सर्फेस है कि स्मूथ सर्फेस है? स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन कम होगा, है ना. हाउ मेनी ऑफ सीन हैव बीन टू अ पार्किंग लॉट? मॉल का पार्किंग एरिया में गए हैं. You always find that the ground is actually very rough. Yeah. The force experienced in the opposite direction when a body slides over another body. Would you agree with me here? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा? फॉर अ चेंज टू हैपन, the body or the bodies do not need to be in contact with the other body. दूसरे बॉडी से उसको कांटेक्ट में होने का जरूरत नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो? प्लीज कॉपी. यहां डू नॉट होगा. Do not need to be in contact. Okay. So look at the contact force. Will you explain this
as a contact force happening, kicking of a ball, contact force है यहाँ, ये contact है ना, ये हाँ, या ये नॉन कॉन्टैक्ट है, लिखा हुआ भी है, या अग्रीड. दिस इज सुपर कूल्ड मेटल एंड नीचे में आपका मैग्नेट है, सुपर कूल्ड है, नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स है ये. दिस इज योर बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नहीं है अर्थ और सन के बीच में, ये not the water falling in the, not the apple falling in the water, but the apple falling. Apple falls because of non-contact force. Agreed? Yeah. Normal reaction force. फिजिक्स में नॉर्मल जो बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर को भी नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है. फिजिक्स में हम लोग परपेंडिकुलर को भी नॉर्मल बोलते हैं. सो लेट्स से यू हैव अ ग्राउंड, जिसके ऊपर 10 kg का मास रखा हुआ है, उसी के पास में एक 40 kg का मास रखा हुआ है, एंड 15 kgs. All of these are on the ground. Agree or disagree? सबका अपना अपना weight होगा. So the weight will act vertically downwards. Yes or no? But ये तीनों फ्लोर को तोड़कर अंदर नहीं चला जाएगा. Would you agree with me? They will stay there. Why? Because the force that is exerted by their weight is balanced by a opposing force called a reaction force. जितना उसका वेट है, जितना उसका वेट का फोर्स है, उतना ही फोर्स ग्राउंड भी, फ्लोर भी वापस ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगा. उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है. Now the reaction force will have the magnitude equal to the weight of the body. The reaction force will have magnitude equal to the weight of the body. ठीक है. तो अगर इसका 40 kgf वेट है, तो रिएक्शन फोर्स भी 40 kgf ही होगा. समझ में आ रहा बात? ये भी वही होगा, 15 kgf होगा. समझ में आया ना मेरा बात? He is saying these bodies do not sink into the ground because they are responded, they are balanced by an equal reaction force. Agree कर रहे ना? अब एक बॉडी आता है 1 ton का, but the body, the ground is not able to balance that. तो ये 1 ton का बॉडी अंदर तक चला जाता है जब तक उसको वो बैलेंसिंग फोर्स नहीं मिलेगा. जैसे बैलेंसिंग फोर्स मिलेगा वो अंदर जाना बंद कर देगा. अग्री कर रहे ना? सो व्हेन यू डाइव इनटू द वाटर, अब अंदर क्यों जाते हैं? बिकॉज द वाटर इज नॉट एबल टू गिव बैक द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, इसीलिए यू गो इनटू द वाटर तब तक जब तक आपका फोर्स बैलेंस आउट नहीं हो जाए. सेम कॉन्सेप्ट है. सो यहां हर चीज बैलेंस का बात करते हैं. तो द रिएक्शन फोर्स is a force that is equal to the weight of the body
रिएक्शन फोर्स is always equal to the weight. If the body is stable on the surface, मतलब वो surface के ऊपर stable है तो रिएक्शन फोर्स वेट से इक्वल हो जाएगा. क्लियर है? दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फोर्स. ठीक है, कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट क्लास में विल डू समथिंग कॉल्ड टेंशन फोर्स एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्ट्रिंग. उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तक यहीं तक रह देता हूं.